Hello, welcome friends for fifth session uh, for AI, second year computer science and engineering. So I welcome you all. Before beginning, just like usual, I would ask everyone that are you able to see the complete slide on your screen and my small feed in the corner? Please raise your hand so that I will start. I will go ahead. Thank you, Pratiksha, Paki, Radhika, Gopal, Tejas, Prajakta, Ashwini. So there are other people, they are not raising their hands. Anyway, I hope Shivani, Dahake, Shankar Shinde, Tanishka and all, they are able to view me as well as able to see the slide. So let us start, friends. So before beginning, I would like to ask, yesterday I told you to send me the screenshots. Only 4 people uh, send me screenshots. I thank Gopal Sheke, Tanishka Nanda and Sanket Deshmukh. Nobody sent me, typically the class CR and NCR, they have not sent me the screenshots of their desktop or mobile phone, whatever. Because I just want to know that everything is going on your end, client side, because I am sitting on the organizer side. So I wanted to confirm it. So whenever you feel there is a problem in a transmission or reception, whatever, you take the screenshot and you send it to me. So I will try to rectify whatever the problem or error is there, whatever. So let us begin. So friends, as I told you that I am recording all the sessions and I am keeping on the YouTube as well as on the FTP site. I have already given you the IP address for that. You can always go there and you can download all the PPTs, PDF from that resource. I will try to put some code related with some important things because there is no practical, but there is an advanced subject somewhere in the 7th or 8th semester to you. So it is better to do not forget the coding side, because if you are not able to code, if only understanding the concepts will not do anything. So you have to understand the concept as well as you have to understand the coding. So lot many options are there, lot many languages are there, like Prolog is there, Lisp is there. Even you can use Java also, and even you can use Python also. But every language has uh, some features are there. So AI is a typically different subject, with a different type of technology. Lot many things are there. So for example, what we are going to learn today is that we are going to understand what is the agent, and there are different types of agents. So agent is nothing but it is a piece of software, or it may be a combination of hardware and software. We shall see in detail, maybe in next sessions, few sessions. So intelligence is, so actually this is AI, means to design an agent. Agent is something which has some components, some parts are there. So you have to implement it in terms of coding. You may use hardware just like a sensor and all that, or combination of that. So there are different types of agents are there. Means when there is some problem against you कि भाई मुझे ये सिस्टम को ऑटोमेशन करने का है, मतलब फॉर एग्जांपल कार है आपकी, यू वांट टू एटोमाइज इट, उसमें ऑटोमेशन क्या क्या करना है आपको, जैसे टायर प्रेशर चेक करने का है, वार्निंग सिस्टम करने की है, पार्किंग सिस्टम ये करने की है. तो डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ your problem, you can select a proper type of agent. So there are different types of agents are there, like reflex agent, model based agent, goal based agent, that we are going to see. And once you decide that this kind of agent can address the task or job against you, then you have to decide what language you can use. मतलब पहले आपको कंसेप्चुअली आपका प्रॉब्लम फॉर्मलाइज करना पड़ता है. व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या ऑटोमेट करना चाहते हैं आप. सिंपली AI doesn't mean only automation. AI means decision making also. So you have to select a proper agent, type of the agent, and depending on that type of the agent, you can select the language also.
And then later you have to decide what database you can use, maybe SQL, MySQL, Oracle, or whatever. You mean you may use MongoDB or structured database, unstructured database, depending on that. So anyway, so today we are just going to see what is the meaning of the neuron, artificial neuron. So try to get the definition of that. Then we are going to understand what is the concept of the NLP, natural language processing. We are going to understand where AI is used in robotics and vision, computer vision. तो रोबोट को भी आंखें होती हैं, like that. Then game is simply not a entertaining thing. Game theory is very, very important. You will find that many intelligent decisions. So game खेलने के जो भी टेक्निक है, like chess, और lot many games are there, like tic tac toe. तो जो भी टेक्निक से हम वो गेम खेलते हैं, those techniques are used in actual IT applications. So game theory is very important. So we are going to just understand how AI can be used in games, and some homework is there. So let us go ahead. So this is general, you might have studied in the biology that there is a synapses there. So try to download this PPT and try to understand the components of any neuron. This is a normal neuron present in your brain, which stores the information as well as it processes some information. So some impulses are there. Impulses मतलब कुछ तो भी इसको input मिलता है, impulse. So some parts are there, like dendrite is there, nucleus is there, soma, body of the cell is there, synapse is there, axon is there. So in this way, information is transferred from one location to another. For example, your palm is there, you are touching to some hot area, then your impulse will be transferred from your palm to your brain, like, and it is stored somewhere, or some action will be taken. Anyway, so this is general structure. So this is very small. So let us say neuron is there, natural neuron, X1, X2, X3. These are the inputs. Different types of inputs are there. So it may be a sense, it may be a temperature, it may be some taste, hot or chili or some sweet, something. So XYZ can be inputs, and they are passing through just like some wire kind of thing, nerve, like bus. And there is something Y1, Y2 and Y3. So Y1, Y2 and Y3, they are representing output. So it may be in terms of action. जैसे मतलब आप बटन दबाते हैं तो लाइट चालू होता है, तो लाइट का चालू होना, ऑन होना या ऑफ होना, that is action. So Y1, Y2 can be there. So it is simply, I am just telling you कि there can be a neuron where there can be multiple inputs, that and different types of inputs. It may be sense, it may be taste or whatever. And output can be there. There can be single output or there can be multiple outputs like Y1, Y2 and like so on. In same way, electronic neuron can be there. So again here X1, X2 and X3, I hope you are able to see this diagram. Can be input. Input can be digital, analog or whatever. Or there can be something sensor instead of that X1 and N. Then there is some summation junction. So it is something like a body of that cell, artificial neuron. So there are certain operations just like a AND or XOR, like, or complement or summation. Lot many operations are there, Boolean operations. And there is something called as a bias. Bias means a regulator. You might regulate your fan by turning that knob. Fast करते हैं आप, slow करते हैं, medium करते हैं, like. So bias is there. So it can be voltage or it can be something. It can be some weight. Instead of voltage, you can use the term weight. Bias can be there. And there is something activation function. Again, it is a mathematical circuit. So some mathematical formula is there.
So it takes the input x1, x2 and whatever, then it performs the function. It gives the output. Now here there is a single output, there can be multiple outputs. It depends on the case. So this is something artificial neuron, and there can be network of neurons, means multiple cells can be attached to each other. So let us think that why we are learning this, why it is needed in AI. Its name is artificial neuron. So neuron is an intelligent system. It takes the input from the environment and it generates some action depending on previous experience. That is the logic. Now, before going ahead, just see this diagram. This is a very big rack. See here, there is one rack, second rack, third rack, fourth rack. That man is standing in front of fifth rack, right? And here there are some slabs are there. So in one rack, there can be 10, 15, 100 CPUs, 10, 15, 24, depends. So multiple CPUs are there. So multiple racks are there. They are interconnected, right? And there is some operating system. Try to understand or try to know that कि supercomputer पे OS कौन सा चलता है. For example, in your laptop, you use Windows or Linux, Ubuntu or CentOS or Fedora. In same way, Google learn which operating system is used in supercomputers. So this is the example of IBM Blue Genie. Blue Genie is the name of that supercomputer. Lot many supercomputers are there. Param, then Anuradha is there. Cremax MP is there. Lot many supercomputers are there, and their different applications are there. So this machine supercomputer was designed around 2008. But 2008 के पहले भी बहुत सारे supercomputer थे. So let us see what is ahead. So in terms of computing power, this is slide that is not important to you, but here is just we are thinking in terms of one neuron, because in our brain millions of neurons are there. In same way, CPU is a neuron for us or something. So we can call it as a computational unit. So a CPU can have 10 raised to power 12 transistors. नॉर्मल कंप्यूटर में 10 raised to power 9 ट्रांजिस्टर्स होते हैं पीसी में या लैपटॉप में, और ह्यूमन ब्रेन में 10 raised to power 11 न्यूरॉन्स होते हैं. यू कैन सी लैटर. देन दिस इज अबाउट द कंप्यूटिंग पावर. सेकंड रो इज देयर, दैट इज रिगार्डिंग द स्टोरेज. तो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर में 10 raised to power 14, दिस इज नॉट फिक्स, इट चेंजेस. अराउंड 10 raised to power 14 बिट्स के रैम होता है. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू गीगाबिट, टेराबिट और व्हाटएवर. पर्सनल कंप्यूटर में 8 GB, 16 GB or whatever RAM is there. Now in case of human, neurons are used to store also, means they are like storage cells. So neuron acts as a computational unit as well as storage element. लेकिन कंप्यूटर में वैसा नहीं होता. हमको स्टोरेज के लिए हमको रैम, रोम, हार्ड डिस्क चाहिए, लेकिन ह्यूमन बॉडी में वैसा नहीं है. न्यूरॉन्स डू बोथ थिंग्स. एनीवे, regarding the cycle time, you might have learned in DAC or some other subjects, that is a clock rate. जितना clock rate अच्छा रहेगा उतना आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा. So anyway, so in this way we can compare the computing power or storage power in terms of human supercomputer and normal computer. Let us see ahead what is there. Now we have seen the definition of AI, that it should do something like a human, act like a human, think like a human. It should act rationally, it should think rationally. That is the generalized definition.
Now, if we want, why we are doing this? Because we want to know if we want to add AI, intelligence, artificial intelligence into our computer system or some program, then we need certain things. So we need certain kind of capability, because there are certain things which can be done in better way by humans. There are certain things which can be done in better way by computers only. There is a certain features of human being which cannot be easily mapped into computers, into AI systems. So for example, theorem proving, you might have right from standard second to 11th, 12th, you learn what is theorem proving, axiom, rules, proof of concepts, whatever. So this is a very hard task for computers. Chess playing is not that much hard. Lekin surgical operations are hard. To cut a patient, critical patient, like, or diagnostic of disease. There might be symptoms, but doctor takes the decision. There are different intelligent systems, or you can call them as expert systems. तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को मॉनिटर करता है और गेस करता है कि इसको क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गई. स्टिल वी rely on surgeon because human can do it in more better way. कंप्यूटर में एबिलिटी होती है कंप्यूटेशन की, क्रंचिंग की, नंबर क्रंचिंग की, ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर यूनिट टाइम करने की कंप्यूटर में एबिलिटी होती है. So there are certain things which are done easily by a human being, and it is very hard to map into computers or AI systems. That's what this is the objective of this slide. Today, I think there is a low attendance. Anyway, only 45 students are there. Now, what we have to think from this slide is that there are certain things which can be done easily by a human being, but human has certain kinds of imperfections. इसमें परफेक्शन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है. तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ह्यूमन की जो अच्छाई है वही मतलब हम एआई में मैप करना चाहती है. व्हाट वी वांट टू डू, वॉट एवर द गुड थिंग्स आर देयर इन ह्यूमन, मे बी थिंकिंग और इंटेलिजेंस, we are going to map into AI artificially. We don't want to map the bad things, imperfections of human into the machines. That is the goal of this slide. Now, this is little theoretical, don't worry about it. After that, we shall see to the main track. We shall go to the main track. Now, how computer performs the tasks? That is a main question. Now, the ability to create and manipulate knowledge. मैनिपुलेट नॉलेज मतलब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में डेफिनेशन होती है एवरीथिंग. जैसे मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज कंपाइलर, तो आपके पास में डेफिनेशन है. व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज ओएस, यू कैन गिव द आंसर, आपके पास में डेफिनेशन है. देन यू हैव कंसेप्ट्स, ह्यूमन हैव कंसेप्ट्स एंड सर्टेन थ्योरम्स आर देयर, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटी और वट एवर. हमारे पास में कुछ ऐसी बातें हैं कि उसका कॉम्बिनेशन करके हमारे पास में एक कंप्लीट नॉलेज आता है. तो वैसा हम कंप्यूटर में इतनी आसानी से नहीं कर सकते. सो वी हैव टू यूज सर्टन टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग. मतलब कंप्यूटर वही थ्योरम प्रूविंग कैसे करेगा या प्रूफ कैसे करेगा, मतलब एखादे थ्योरम को प्रूव कैसे करेगा. सो दोज थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स. सो मैनिपुलेशन ऑफ नॉलेज इज अ, और नॉलेज को रिप्रेजेंट भी कैसे करने का, हाउ टू स्टोर नॉलेज, वेदर इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वंस और वॉट एवर, दैट वी हैव टू थिंक.
So last question is there, that what is the impact of hardware on low level reasoning? So reasoning is nothing but it is a logic, lower level logic. तो सिग्नल्स रहते हैं, पल्सेस रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पल्स 0 and 1, वोल्टेज 1 and 0 वोल्टेज, या देयर माइट बी सम सिस्टम -11 वोल्ट मतलब 0 +5 वोल्ट मतलब 1, ऐसा भी हो सकता है. So that things are there. Means how to represent the knowledge in terms of signals. That is the question. Now we shall see the definition of agent. But before that, what is the goal to build the agent? Why we want to build the agent? So as I told you that key agent is something who receives the information from the environment and gives to the actuators, to someone. There are certain things like consciousness, self-consciousness, desires, emotions, जैसे love, feeling, happiness. तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कंप्यूटर में ऐड करने के लिए. जैसे मतलब फियर ऑफ डाइंग, किसी ने अगर जोक मार दिया है तो आप हंसते हैं, ह्यूमर, ये भी खतरनाक कॉम्प्लेक्स फीचर है ह्यूमन का, जिसको हम कंप्यूटर में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. इमोशंस, डिजायर, love for someone, love for music, fear of dying, like that. So these are the things you have to think while learning AI and applications of AI. And there is something called as a utility. So utility is a concept. I have underlined it. It is in blue color. Utility मतलब एखादी इवेंट होता है. मान लो आपका कोई कंपनी में सिलेक्शन हो गया, जो आपकी ड्रीम कंपनी है, मान लो आप गूगल में सिलेक्ट हो गए, आप हैप्पी हो गए, तो आपका हैप्पीनेस तो मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देयर कैन बी सम स्केल 0 to या 1 to 10, 7 हैप्पी हूँ, 8 हैप्पी हूँ, या 3 हैप्पी हूँ, लाइक दैट. So that is the concept of utility. Means there are certain things which can be scaled in terms of A, B, C, D, or 0 to 1 or 1 to 5, like that. So that is there. So this is the concept of utility. We shall see this is the important concept. Means agent is a concept and utility is a concept. मतलब उसका you should be able to measure it. आप हैप्पी हो गए तो कितने हो गए, आप डर गए मतलब कितना डर गए, like that. I hope you got what I want to say. So utility is something that it is representing the quantity. कितना हैप्पी है, कितना दुखी है, like that. Now regarding natural languages, we know you already might be using WhatsApp for chatting. Lot many chat applications are there. So live chat is a different thing. You interact with some other person. But chatbot is some application. So you interact with the machine, or you interact with some application program, that is chatbot. So try to Google it, learn about what is chatbot, how it is implemented, what are the frameworks available, open source and commercial, available in the market. Open source है तो डाउनलोड करो उसको. You can design your own chatbot in a few hours if you know Python or some other language at some level. So chatbot is nothing but it is an application which is automatic. It replies to the person who is interacting with it. The interaction might be anything. He may ask you a question. He may send you some emoji. He may send some image, like, so depending on the input, the chatbot responds like that. And try to understand कि chatbot का application क्या है. So for example, I would like to ask गायत्री रघुवंशी. गायत्री आहे का? गोपाल शेळके, hello.
See, don't hesitate if someone wants to. Yes, sir. हा गोपाल हे बा तुम्ही चॅटबॉट ऐकलं असेल कधीतरी पण तुम्हाला तुम्ही चॅटबॉटचं एखादं अप्लिकेशन सांगू शकता जे आता मार्केटमध्ये कमर्शियली पॉप्युलरली यूज करतात. मैसेंजर है सर. कशाचं? मैसेंजर फेसबुक सर. नाही, चॅटबॉटचं अप्लिकेशन म्हणजे चॅटबॉट इज समथिंग डिफरंट. तर तिथं काय होतं की तुम्ही एखाद्या कम्प्युटर प्रोग्रामसोबत चॅटिंग करता. तर फॉर एक्झाम्पल देर इज अ बँक से बजाज फायनान्स और से HDFC आणि तुम्ही लोन घेतलेला आहे. गूगल असिस्टंट सर. गूगल असिस्टंट. हा ठीक आहे, बरोबर आहे बरोबर आहे. तो देर कॅन बी सम बँक from where you have drawn some loan, maybe car loan or some personal loan, and there are 7 or 8 installments. So you can interact with the chatbot of that bank and you can ask कि मेरे कितने हफ्ते बाकी है, how many installments are remaining, what is the interest, what is the annual interest, what is the monthly interest, how many defaults are there. Default मतलब एखादा हफ्ता है, मान लो आपको हर सैलरी के 3 तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट जमा करना है बैंक में और आप 3 तारीख को जमा नहीं कर सके कुछ कारण से, मान लो आपका सैलरी लेट हुआ या हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ कोविड सम रीजन, तो आपको पेनल्टी लगती है, राइट. तो आपको कैलकुलेट करना है कि भाई पेनल्टी कितनी लगी है और मेरा इस बार का हफ्ता क्या है और पेनल्टी कितनी है और टोटल अमाउंट कितना है. अगर आप पे करते हैं तो आपका बचा हुआ कितना लोन अमाउंट रिमेनिंग है. तो यू कैन आस्क विद द चैटबॉट. तो बजाज फाइनेंस इज द एग्जांपल. सो देर आर ऑन वेबसाइट्स, इट इज इंटीग्रेटेड विद द वेबसाइट ऑन बैंकिंग साइट्स. तो आपको उसको मोबाइल नंबर देना पड़ता है एंड देन इट इंक्वायर्स योर number of means it gives you all the details of your loan, installments, defaults और जो भी कुछ calculations है आपको बताता है वो. So these are the intelligent applications. Say to log into some web application. Web application means simply a website. For example SBI का वेबसाइट है, आपका अकाउंट है, आप उसके अंदर में लॉगिन करते हैं, उसमें से भी आपको पता चलता है कि आपका बैलेंस कितना है, कितने आपने ट्रांसफर किए, कितने रुपए आपने कहाँ कहाँ खर्च किए, आपको पता चलता है. ट्रांजेक्शन, देर आर ट्रांजेक्शन, क्रेडिट एंड डेबिट. लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, आपको खुद को लर्न करना पड़ता है. यू हैव टू गो थ्रू द पर्टिकुलर मेनू एंड ऑल दैट एंड यू गेट द डिटेल्स. लेकिन चैटबॉट इज एप्लीकेशन, वो आपको मतलब वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए नहीं बोलता, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन देता है. तो यू कैन इंटरेक्ट विद द चैटबॉट बाय यूजिंग कीबोर्ड और यू कैन सिंपली स्पीक विद द चैटबॉट. यू कैन आस्क बजाज फाइनेंस चैटबॉट कि भाई मेरा पिछले 2 महीने का मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं किया, तो ये महीने का और पुराने महीने के डिफॉल्ट पकड़ के इस बार का मेरा इंस्टॉलमेंट क्या है, लाइक दैट. व्हाट इज फाइन, व्हाट इज अ पेनल्टी, लाइक दैट. एंड दैट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सर्चेस इनटू द डेटाबेस, बैंक डेटाबेस, एंड गिव्स यू प्रॉपर आंसर्स. इवन इट सजेस्ट यू, आपको मतलब आपके फायदे के लिए वो सजेस्ट भी करेगा, लाइक दैट. सो दैट इज अ काइंड ऑफ द concept of the chatbot. So what I suggest is that nowadays almost all good companies are using chatbots with their websites, or they are giving special applications on mobile phones. So customers or clients get information about their there can be some travel planning is also there, or hotel booking on all that is there. तो वो आपके लिए काम करता है. मतलब यू डोंट हैव टू डू इट मैन्युअली और फिजिकली इंटरेक्टिंग विथ योर वेबसाइट और वॉट एवर. दैट एप्लीकेशन और चैटबॉट एप्लीकेशन डू एवरीथिंग फॉर यू, जो भी करना है. जैसे OTP वगैरह आ गया, हैंडलिंग एंड ऑल दैट. सो एनीवे, इवन दो यू आर इन सेकंड ईयर, आई सजेस्ट यू read something about chatbot and see what are the applications areas of the chatbot. Suppose I ask you what is the why people build a website, so you should be able to answer it in 2 or 3 lines. In the same way, you should be able to answer what are the applications of chatbot, what are the application areas,
ऐसा नहीं कि मतलब बैंकिंग ही, देर आर लॉट मेनी एप्लीकेशंस. आपने कभी कियोस्क वगैरह सुना होगा, या फिर इफ यू गो ऑन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, so there is something PNR inquiry kind of that machine is there. You can inquire, you can track the train, and you can guess regarding the late or delay in the train and all that. So there are lot many applications of areas are there for chatbots. Anyway, but try to understand the difference in a chatbot and live chat. Now there is another system that is called the IVR, Intelligent Voice Response System, or Interactive Voice Response System. Many times you dial, so that machine or that automatic voice comes to you, press 1 for Hindi, press 2 for English, like that. Talk to our customer representative, whatever. So try to understand what is IVR, what is the difference in IVR, and what is the difference in chatbot application. So I will not talk about more about the IVR. You all know what is that. So as an engineer, you must know what is a chatbot application, what are the features of, मतलब उसकी chatbot हम किस किस लिए बना सकते हैं. In same way, IVR हम IVR system, it is also intelligent. You can put AI in that. IVR हम किसके किसके लिए बना सकते हैं, कौन से टाइप के क्लाइंट्स के लिए हम बना सकते हैं, like that. Think in that way. So hope IVR is all you are familiar with, because almost all you are using phones. Now regarding just, I will not talk much, but we have to understand what is a natural language processing concept, because now this is a very advanced. Just your Gopal told me that Google Map is one application, text to speech is an application, speech to text is an application, or you can give command to your application and it will respond your command. So these are the some terms, you try to understand it. Later we shall see. SIRR, so that is a speech technology. ASR, automatic speech recognition. TTS, text to speech synthesis. There are some applications when you can talk in Japanese language and you will get output as a English, like that. Then dialogue systems are there. So chatbot and IVR is example of dialogue system. Now there are different types of language processing technologies are there. See, compiler is also a language processing technology. जो भी आप assembler पढ़ते हैं, compiler पढ़ते हैं, system software पढ़ते हैं, loader, linker and all that. So these are the language technologies. जो आप लोग TOC में पढ़ रहे हैं, that is a language technology. So question answering is a part. Machine translation, मतलब conversion from one form to another, is a language processing technology. Web searching is there. Text classification is there. Spam filtering is there. So you have to understand these things. Can anyone tell me what is spam? I think almost you might have. Almost everybody has a mail account. Adish Raipure, सांगू शकता का what is spam? How you will define spam? Since spam is a general term, you can use it with mail, spam Sir, mail. spam are means those messages which keeps on repeating or which are not required in the text. Right, and it is something more than that. Means, for example, there might be some messages sent by the person who is not known to you. Unknown persons. Unknown persons. मतलब जैसे वियाग्रा की एड्स आ गई, आपको पता नहीं है उसका, आपका उसका कुछ काम नहीं है, मतलब फिर भी आपको वियाग्रा का ईमेल आ गया है. या फिर आप अभी स्टूडेंट ही है, यू गेट अ मेल लाइक हरी, लेस टाइम, परचेस द प्लॉट, बहुत अच्छे रेट है, लाइक दैट. तो आप तो अभी पढ़ ही रहे हैं, आप कुछ नौकरी नहीं करते या इंटरप्रेन्योर नहीं है, फिर भी आपको ऐसी ऑफर आती है, बेकाम की ऑफर आती है, लाइक दैट.
So someone sends it, that is not a problem. But sometimes what happens is that there are some people like hacker or maybe some other people, spy type people, they have one program, automatic program, and it sends mail to lot many people with fake ID. जैसे मान लो आपको अगर बिल गेट्स के नाम से ईमेल आया कि भाई गायत्री जी आप मतलब फलाने फलाने इसमें ये हो गए, आपको इतने इतने रुपए का ये मिल गया, तो व्हाट हैपन्स, यू गेट सरप्राइज, क्या समथिंग एट द रेट बिल गेट्स एट द रेट से microsoft.com ऐसा करके आपको है, और आपका रहता है gayatri@gmail.com, because it is a domain name और email ID. तो when you check that mail, तो आपको पता लगता है कि भाई ये जो है billgates@microsoft.com, ये अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं है. What I want to say, are you getting me? You are receiving some mail from some account which is not existing. मान लो xyz@microsoft.com ये अकाउंट है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग. स्टिल आई कैन सेंड यू अ मेल एज अ सेंडर. आप जब रिसीव करेंगे इसको तो आपको सेंडर करके ऐसा एड्रेस आएगा xyz@microsoft.com. मतलब क्या है, इट इज अ नॉन एग्जिस्टिंग सेंडर आईडी, आपको मेल आती है. तो डेट इज कॉल्ड एज अ, मतलब इसको आप स्पैम बोल सकते हैं कि जो आईडी एग्जिस्टिंग नहीं है लेकिन वो टाइप से आती है. देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस, स्पैम आईपी, स्पैम मैक लाइक. सो स्पैम इज समथिंग कि आपको फेक इससे आता है. मतलब मान लो एक आधा आदमी आपको मिलता है कि मैं आपका अंकल हूँ, सब बताता है आपको, लेकिन एक्चुअल में वो है ही नहीं लाइक दैट. मतलब वो बनावट, मतलब ऐसा झूठा दिखावा करता है कि वो है, बट व्हेन यू इंक्वायर you will find that कि ये नहीं है, मतलब ये नकली है लाइक दैट. सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ स्पैम. कि भाई जो एग्जिस्टिंग किसने डेलिबरेटली, अगर समझो मैंने डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर 10 लोगों को मेल भेजा, तो दैट इज नॉट अ स्पैम मेल. प्लीज नोट दिस. इफ आई एम सेंडिंग बाय सम अकाउंट विच इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर, मतलब जीमेल पे नहीं है, याहू पे नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं है, हॉटमेल पे नहीं है, और वो अकाउंट के नाम से अगर मैं आपको मेल भेजता हूँ तो दैट इज स्पैम मेल, क्योंकि वो अकाउंट का, ईमेल अकाउंट का या आईडी का एग्जिस्टेंस नहीं है. तो हमको बहुत सारे मेल आते हैं, एंड इफ वी मैन्युअली ट्राई टू डिलीट देम तो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इट में टेक्स आवर्स. आपका मेन काम ही आप भूल जाएंगे. तो देर आर सम प्रोग्राम, दोज आर कॉल्ड एज स्पैम फिल्टर्स. तो स्पैम फिल्टर क्या करता है, यू हैव टू परचेस इट. देर आर ओपन सोर्स स्पैम फिल्टर्स और देर आर सम फायरवॉल्स और एंटीवायरस टाइप ऑफ थिंग्स. तो वो क्या करते हैं कि अननोन जो मेल आते हैं, स्पैम मेल्स आते हैं, उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उनको ब्लॉक करता है. आपका जो मेल बॉक्स रहता है उसमें वो उसको आने नहीं देता. अदरवाइज एवरी मेल बॉक्स हैज सम कैपेसिटी, 1 GB 2 GB और वट एवर. तो आपका मेल बॉक्स एग्जॉस्ट हो जाएगा. तो स्पैम फिल्टरिंग में भी एआई का यूज़ करते हैं. तो व्हाट एआई यूजेस लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फिल्टरिंग, ऑल दैट. तो वो क्या करता है, वो मेल में देखता है कौन से आइटम है इसमें. जैसे बिन लादेन नाम का एक वर्ड है भाई, लाइक. सो सस्पिशियस वर्ड्स को ट्रैक करता है और डिपेंडिंग ऑन दैट इट डिसाइड्स दैट कि दिस इज स्पैम मेल, और उसको आपके इनबॉक्स में से डिलीट कर देता है. इन दिस वे इट सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी. So this is a very big problem everybody is facing. Now this is another example. The object and face recognition. So you might have seen many applications, but let us say this person is moving his hand like so. Camera is detecting and guessing कि भाई वो क्या कर रहा है, whatever. Or send segmentation. See, there are two terms. As I told you that you should keep the copy with you while attending this lecture. So write in your copy what is segmentation and what is classification. And you should have definition of that. Later I will tell. So segmentation is something different. जैसे मतलब टाइगर है, टाइगर हैज स्ट्रिप्स. जेब्रा को भी स्ट्रिप्स होती है. और देर आर मेनी एनिमल्स.
But by watching those strips, you should be able to understand कि भाई ये टाइगर है, ये zebra है, ये गधा है, ये और कुछ फलाना फलाना जिराफ नाम का एनिमल है, like that. So segmentation is a concept. In same way, classification is a concept. So you should have definition for them. So write in your copy two words, segmentation and classification. And these are generalized. ये मतलब simply image processing के लिए use नहीं करते ये. It is everywhere. You will learn lot many algorithms, and these concept of classification and segmentation are used everywhere. Even there is one more term that is called as a clustering. मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें हम उसको ग्रुप में करते हैं. That is called as a clustering. So write about and learn about them. Then just I will go through it. So there are many applications like games are there. For example, in one picture, there are some dogs are there, robotic dogs, and they are playing some game like football like game or soccer like game. So every robot is a AI, and they know how to handle the ball. They know goal, they count the goals like that. So these are two different teams, and they are playing automatically by using AI. So in robotics, there are a lot many technologies that are there. So AI can be combined with the electronics. AI can be combined with the mechanical parts like that. Then technologies are there. Vehicle rescue. You know what is that? And some automation is there. So car is also automatic driverless car. This is an example. So these are the areas only. Again, logic is there. Some logical systems like I told you the theorem proving. Lot many theorems are there. So human has a brain. He uses his previous knowledge and solves the problems or prove the theorem. Then fault diagnosis is there. So electronic circuit में का fault निकालना, vehicle में का fault निकालना, मतलब oil कम हो गया है भाई, engine गर्म हो रहा, like that. In vehicle अगर आपका oil बराबर नहीं है, लेवल बराबर नहीं है, तो आपकी गाड़ी हीट करेगी, तो वो डायग्नोस करेगा. Questions and answering. So these are called as a logical systems. And there are some methods like deduction system is there, constant satisfaction is there. Constant means something, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हैप्पीनेस, तो आप कितना हैप्पी है, 10 लेवल का हैप्पी है, 9 लेवल का हैप्पी है, like that. So certain threshold is there, some limits are there, start limit and end limit, some constraints are there, and satisfiability solvers are there. So anyway, these are the terms, you have to go through them. Now in gameplay, we have just seen the example of IBM Blue. That was a supercomputer. See, and I told you what is the size of that supercomputer. So there were almost one rack. One rack contains many CPUs. There are multiple racks in one row, and there are multiple rows like that. And though all are connected with each other, and some operating system or software is handling that, that thing is called as a supercomputer. और ह्यूमन है कास्पारोव करके आपने नाम सुना होगा, उसने उसके साथ में चेस प्ले किया था, लाइक दैट. मतलब व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि इफ यू वांट टू बिल्ड द इंटेलिजेंस इनटू द कंप्यूटर्स, देन यू रिक्वायर ह्यूज कंप्यूटिंग पावर. कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा होना मतलब आपको स्पेस भी ज़्यादा होना, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा होना, CPU भी ज़्यादा होना, लाइक दैट. आपने कभी वाटसन का नाम सुना है किसी ने? If anybody who has listened IBM Watson. तो IBM Watson is also a kind of computer, just like a supercomputer. तो जैसे हम लोगों के क्विज होते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, यार लॉट मेनी सीरियल्स आर देयर, channels, lot many serials are there, like quizzes are there. So what happens? One or two teams are there. So one man team can be there or multiple man team can be there, and they solve some puzzles or maybe they answer some questions in a limited time or short time.
लाइक दैट। तो वाटसन क्या है कि एक सुपर कंप्यूटर है जिसको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वाटसन नाम का एक आदमी था, मतलब कंप्यूटर, और एक दूसरा आदमी, और इनका एक जैसा कौन बनेगा करोड़पति हो गया, मतलब टीम था। मतलब वो कंपटीशन में वाटसन जीत गया था। वाटसन इज अ IBM कंप्यूटर। तो इट इज़ अगेन अ बिग ह्यूज मशीन। तो इंटेलिजेंटली हर टाइप के आंसर देता था वो। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज हिस्ट्री, शिवाजी कब पैदा हो गए, वगैरह वगैरह। अगेन ही वॉज एबल टू नो, उसको जियोग्राफी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी सब आने का, एंड ही वॉज एबल टू आंसर जस्ट लाइक अ ह्यूमन। So anyway, our time is ending. I am going to close. Just let us go through few slides. So anyway, Deep Blue is the name of the machine. तो गैरी कास्पारोव नाम का फेमस चैंपियन है, रशियन है, उसने उसको बीट किया था। तो मे बी 1997। Then decision making systems, I will just read it, don't worry about it. So scheduling airline और मिलिट्री का कार्गो होता है। जब कभी वार होता है तो मिलिट्री रिक्वायर्स मेनी थिंग्स, मतलब उनके खाने के लिए सामान होना, बुलेट्स होना, एमिनेशन होना, आर्म्स होना, बंदूकें होना, लाइक जो भी है, तो उनको प्लान करना पड़ता है। और जो उसका स्टोरेज रहता है, स्टोरेज मतलब उनका जो स्टोर होता है वो अलग अलग ठिकान पे होता है। कोई रायपुर में है, कोई जालंधर में है, कोई दिल्ली में है, लाइक दैट। और वार का जो साइट है वो साइट कहीं तो भी मे बी सियाचिन और समवेयर रहता है। तो उनको उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो शेड्यूलिंग, उसको शेड्यूलिंग बोलते हैं। कम से कम टाइम में आपकी रिसर्च जो है, आपका जो ये है, वो जाना चाहिए वहाँ तक, उसको प्लानिंग करना पड़ता है। अगर ह्यूमन करेगा तो क्रिटिकल सिचुएशन में ह्यूमन बराबर नहीं कर सकता। तो नाउअडेज दिस पीपल आर यूजिंग AI। रूट प्लानिंग, जैसे गूगल मैप आपको बताता है साइकिल से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कार से जाएंगे तो कितना, ट्रेन से कितना, पैदल गए तो कितना, लाइक दैट। तो यू कैन प्लान डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट। कॉस्ट मतलब टाइम भी कॉस्ट है, टाइम की भी इज आल्सो कॉस्टली एंड मनी इज आल्सो कॉस्टली। Then medical diagnosis, web search engines are there. I will not talk about web search engines, but this is very good area. Lot many web search, आपको सिर्फ गूगल ही पता है। There are many different types of AI based search engines are there. Try to use them and try to learn what are different search engines available on internet. Automated help desk, जैसा वो IVR system मैंने आपको बताया। Fraud detection is there and product recommendation। जैसे आपने कोई जूता खरीदा या कुछ, तो आप जब भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको रिकमेंडेशन मिलता है। बिकॉज अमेजोन क्या करता है या फ्लिपकार्ट क्या करता है, दे ट्रैक यू। आप पेट्रोल कहाँ से लेते, आप पिक्चर कहाँ देखते, आप कौन से शॉप में कार्ड से स्वाइपिंग करते, पेमेंट करते, या कहाँ पे UPI यूज़ करते, मतलब जैसा गूगल पे या फ़ोन पे या फिर मान लो जो भी है अमेजोन पे यूज़ करते, वो आपका सब डेटा ट्रैक करता है। और आपके हिसाब से, आपके ट्रैकिंग से वो गेस करता है कि ये आदमी को अभी फुटबॉल का बॉल चाहिए, या फिर ये पर्सन ही वांट्स टू बाय वन शर्ट, लाइक दैट। तो वो आपको क्या करता है कि आप जब भी कोई ईमेल खोलते हैं या कुछ भी, तो आपको रिकमेंडेशन देता है कि भाई ये जूता इतने में है, इतना इतना ऑफर है, लाइक दैट। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। उसको आपने बताया नहीं कि आपको जूता चाहिए कि नहीं। आपको खुद को भी पता नहीं है कि आप जूता लेने वाले हैं कि नहीं अगले महीने। मान लो इन नेक्स्ट मंथ यू वांट टू परचेस अ जूता और नॉट, और ड्रेस, और मे बी पैंट, you don't know. But there are intelligent applications who watch you through your activities like payment, swiping, smart card or whatever, credit card or whatever, and they predict कि भाई ये आदमी इसके बिहेवियर से ये अगले महीने में जूता लेने वाला है, like this. So it is very interesting thing. So there are decision making systems, and that's why I have shown this slide कि where AI can be used. So friends, I am going to conclude. So only last जिसको जो मुझे बताना था आपको वही मेन यहाँ पे है। I wanted to tell you what is agent, then I wanted to tell you what is structure of agent. I wanted to tell you what are different types of agents. For example, simplex agent, model based agent, goal based agent, utility based agent. So AI मतलब क्या है? We have to, if you understand what is agent, different types of agents, और agent मतलब क्या,
तो एजेंट इज नथिंग बट इट इज आर्किटेक्चर एंड प्रोग्राम. प्रोग्राम मतलब AI टाइप का प्रोग्राम. आर्किटेक्चर मतलब जो भी आप यूज कर रहे हैं, पीसी या लैपटॉप, कंप्यूटर, व्हाटएवर. So that thing is called as an agent, AI based system. So that is whole crux of this subject. So there are basically limited number of agents. Like I have just listed here 4: simple reflex agent, model based agent, goal based agent, and utility based agent. So that we shall see in next lecture. So agent is nothing but it is something which receives information from the environment. Environment मतलब कोई भी environment. And it has perception. Receives मतलब percept करता है, आकलन करता है. So for that it uses sensors, temperature sensor, weight sensor, like that. और उसको action लेता है. So agent has some parts. Environment is one part, sensor is one part, actuator is one part. So I will tell you what is actuator. मतलब पीजो इलेक्ट्रिक बजर जो रहता है आपके फोन में, या आपके फोन में वाइब्रेटर है जो वाइब्रेट करता है फोन कॉल आया तो, दैट इज एक्टिवेटर, राइट. सो सेंसर परस्यूज द इंफॉर्मेशन एंड एक्टिवेटर मीन्स दैट इज वॉट एवर द डिवाइस इज देयर, इट एक्ट्स, इट गिव्स सम रिस्पॉन्स. जैसे लाइट लगना, लाइट बंद होना, LED बंद होना, लाइक दैट. So that all these things we shall see in next lecture, and we shall see what is the how to measure it. मतलब PEAS is there: performance, environment, actuator, and sensor. So there are different types of agents, and different PEAS elements are there. You note down this keyword in your copy: PEAS, performance, environment, and actuators. So टैक्सी ड्राइवर को अगर आप एजेंट बोलते हैं तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके एक्टिवेटर्स कौन से हैं, और उसका सेंसर कौन सा है, अगर आपको उसका ऑटोमेशन करना है टैक्सी ड्राइवर का. इन सेम वे lot many are there. Satellite system is there, refinery controller is there, interactive English teacher is there, automatic teacher. So you have to think in terms of PEAS: performance, environment, and actuators and sensors. So in this way, once we know the components of your agent or type of agent, then we can build the AI system for that task. So friends, I am thankful to you. I am ending here. I am very thankful. You 2-3 of you have interacted with me, but I will be very happy if you, without asking, you should ask me, or you may interrupt me, even whatever the doubt. It is not simply doubt. You can ask anything. So I will not. Don't think that you are interrupting me. You can always raise your hand, or you can put your query in a chat box, whatever is there, chat is there, and you can ask the questions, or even you can send questions on personal WhatsApp. So thank you. I am stopping here, and